Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we will discuss about the computer awareness. The questions are on your screen. The first question for you: each dash on a menu performs a specific action. Each dash on a menu performs a specific action. Each dash on a menu performs a specific action. Options: option A client, option B server, option C node, option D command, and option E none of these. प्रत्येक गोटे कोनटा जहा की परफॉर्म करे किछि गोटे स्वतंत्र प्रकार काम किछि गोटे करि थाए तो सेटा को एग्जैक्टली हमें कोन बोली कहू. If anyone know the answer, simply give the response by chat. Each dash on a menu performs a specific action. Anyone? The right answer is command. कहीं ना हमें प्रत्येक कमांड को नहीं की किछि गोटे काम करि थाउ. मेनू रे जहाँ भी गोटे गोटे थाए ता गोटे गोटे ऑप्शन बा कमांड्स बोली कहନ୍ତି. जेमति कि हमें होम टैब फिटैचे से होम टैब भितरे अनेक गुडा ग्रुप थाए से ग्रुप भितरे गोटे गोटे ऑप्शन थाए तो दैट ऑप्शन और कमांड गिव द सम इंस्ट्रक्शंस. जेमति कि बी मारले बोल्ड हमें लेखा को बोल्ड करूचे तो ईच थिंग इज नोन एज कमांड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस on a worksheet are called. Horizontal and vertical lines worksheet रे exactly कौन बोली कहंती. Options A cells, option B sheets, option C block lines, option D green lines, option E none of these. The horizontal and vertical lines on a worksheet are called. जो horizontal एवं vertical lines गुड़ा को वर्कशीट रे पड़ी थाए ताको एग्जैक्टली कौन बोली कहंती. A, B, C, D या फिर E? Which is the right answer? The right answer is option D, green lines. ताको green lines बोली कहंती. एक्चुअली हमें एक्सेल रे देखु गोटे वर्कशीट को जतला मैं स्टार्ट करी थाउ से वर्कशीट रे अनेक गुडा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड्स पड़ी थाए. माने अनेक गुडाए माने स्लीपिंग लाइंस एवं अनेक गुडाए स्टैंडिंग लाइंस पड़ी थाए. समांतराल भाबे किछि एवं किछि एपडा पड़ी थाए. तो जोडा को स्लीपिंग लाइंस द्वारा रो तयारी थाए एवं स्टैंडिंग लाइंस द्वारा कॉलम तयारी थाए. ताले एट तो रो कॉलम रे किछि ऑप्शन कथा नाही. ऑप्शन थिला जे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस गुडा पड़ी थाए ताको एग्जैक्टली कोन बोली कहंती. तो ऑब्वियसली ताको ग्रीन लाइंस बोली कहंती. ओके, to delete an incorrect character in a document, dash to erase to the right of the intersection point. To delete an incorrect character in a document, document रे कोनोसी गोटे कैरेक्टर भूल ही जाईची ताकू इरेज करिबा को चाहूचो काटिबा को चाहूचो the right of the intersection point. मु लेफ्ट कथा कहि नै, राइट इंटरसेक्शन पॉइंट बा कर्सर पॉइंट जोटी अछि ता राइट साइड को काटिबा पाई. Which key is to be used? Press the left mouse key, press the delete key, press the backspace key, press the F9 key, and none of these. Which option is the right answer? To delete an incorrect character in a document, dash to erase to the right of the intersection point. Intersection point जोठी अछि तार राइट साइड को किछि कैरेक्टर को मते इरेजिंग करिवार अछि, नॉट लेफ्ट साइड. ताहले मते एमानक भितरु को की को प्रेस करिबा को पड़िबो. If anyone know the answer, simply give the response by chat. Press the left mouse key, press the delete key, press the backspace key, press the F9 key, and none of these. The right answer is press the delete key. जदि लेफ्ट मु पचाइ थांदी ताले बैकस्पेस
की मारिले बाम पटु को कटिबो किंतु मते डाहाण पटु काटिबार अछि तो मते डिलीट की क्यों ही प्रेस करिया पड़िबो सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हां तमे सिंपली डिलीट की खाली भी यूज करा जिवो नहीं तमे ऑल सहित डिलीट तुमको मारिया को पड़िबो ओके डैश ए डॉक्यूमेंट मींस the file is transferred from another computer to your computer dash a document means the file is transferred from another computer to your computer कौन डॉक्यूमेंट रो माने कौन की जहा की ट्रांसफर हबो अन्य गोटे कंप्यूटर को तम कंप्यूटर को ऑप्शंस आर अपलोडिंग ऑप्शन बी रियली सिंपली सिंडिकेशन ऑप्शन सी accessing ऑप्शन डी डाउनलोडिंग and option E none of these dash document means the file is transferred from another computer to your computer anyone know the answer the right answer is downloading option D is the right answer डाउनलोडिंग डॉक्यूमेंट मान होची कोन की जहा की गोटे अन्य गोटे कंप्यूटर रो तम कंप्यूटर को आसीबो अपलोडिंग मान होची एया की तम कंप्यूटर रो कोनोसी डाटा अन्य गोटे कंप्यूटर को जीवो ताले जदी रिमोट कंप्यूटर रो यूजर कंप्यूटर को आसे दैट इज नोन एज डाउनलोडिंग एंड जदी यूजर रो कंप्यूटर रो रिमोट कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर हुए दैट प्रोसेस इज नोन एज अपलोडिंग क्वेश्चन थिला dash a document means the file is transferred from another computer to your computer अन्य गोटे कंप्यूटर रो तम कंप्यूटर को आसीबो सो दैट इज नोन एज डाउनलोडिंग ओके codes consisting of bars or lines of verifying widths or lengths that are computer readable are known as codes consisting of bars or lines verifying widths or lengths that are computer readable are known as codes जहा की consisting हेते बार बा लाइन गुडा को आइदर सेटा बार आकार पडिथिबो बा सिंपली मोटा सरू गार आकार भी पडिथिबो जहा की ओसार दृष्टि आकार दृष्टि भी भिन्न भिन्न होइथाय जहा की कंप्यूटर रीडेबल करे बा कंप्यूटर तक से गार रो माने बा से बार रो माने बुझी पारे तो एग्जैक्टली ताको कंप्यूटर भाषा रे कोन कहंती ऑप्शन ए बार कोड ऑप्शन बी an ASCII code option C a magnetic tape option D a light pen and option E none of these codes consisting of bars or lines of verifying widths or lengths that are computer readable known as anyone can give response question number 5 the right answer is ए बार कोड ताको एग्जैक्टली हमें गोटे बार कोड बोली कहो हमें जे कोन से जिंस किनु ता पछरे जो बार कोड लागि थाए से बार कोड ऊपर जतला हमें बार कोड रीडर को पकई दो सेते बेले कोन हुए हां एस यू हैव गिव राइट आंसर दैट इज द बार कोड ए राइट आंसर तो बार कोड रे हमें तले स्कैन करि दो तो बार कोड रो डिटेल इंफॉर्मेशन ता हम कंप्यूटर को पढाए तो से बार कोड रे प्रोडक्ट रो डिटेल इंफॉर्मेशन ता को फीड थाए ओके next question for you when you save your data to dash it will remain intact even when the computer is turned off when you save your data to dash it will remain intact even when the computer is turned off हमें डाटा को सेव करूछ आइबो सेटा कंप्यूटर रे रही भी जाउची जदी कंप्यूटर भी बंद ही जाउची ताले व्हाट इज दैट ऑप्शन ए RAM option B motherboard option C secondary storage device option D primary storage device and option E none of these when you save your data to dash तमे जब डाटा को सेव करूछ कोन केमिति it will remain intact even when the computer is turned off तम कंप्यूटर टर्न ऑफ हेले भी से डाटा गुडा को रहूची then what is that thing option A option B option C option D या फिर option E which is the right answer very simple questions and that are also very intelligent questions so try to identify these things
Anyone can give response? What is that thing? Question number 6. You give response as option D. That is wrong answer. Primary storage nuhe, that is secondary storage. Option C ta hochi right answer. Kahi ki ta reason bi mu koi douchi. Primary memory cannot store data permanently. Primary storage re data permanently jane store kari paribo nahi. As long as the power supply is on, data inside primary memory. जे पर्यंत कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई ऑन थाए से पर्यंत कंप्यूटर सिस्टम रे डाटा थाए. As soon as the power off, जेतले पावर ऑफ ही जाए, डाटा इनसाइड प्राइमरी मेमोरी हैज लॉस्ट. द प्राइमरी मेमोरी जहाँ डाटा थाए सेटा नष्ट हो जाए. तो RAM एवं ROM होची कंप्यूटर रो दीटा प्राइमरी मेमोरी. And secondary memory means it supports or supplements the primary internal memory. आमर पुराना समय शुनिथिबो गोटे कहନ୍ତି मेन एग्जाम गोटे कहନ୍ତି सप्लीमेंटरी एग्जाम. सप्लीमेंटरी माने से किछि सहयोग करियो, किछि एडिशनल दबो. ताले ये केमति सहयोग करिवो ना इट कैन स्टोर मास इंफॉर्मेशन परमानेंटली. ताले एथिरे जो इंफॉर्मेशन गुडाक परमानेंटली बा स्थायी भाबरे स्टोर हुए. ताले से सेही कथा पचारिथिला तबे डाटा को सेव करिबा को चाहूचो एबो सेटा रहिबो कंप्यूटर टर्न ऑफ हेई गले भी. ताले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जेमती कि तमर हार्ड डिस्क हेई पारे. तम कंप्यूटर स्टार्टिंग कर जहाँ देखुछ ना सब हार्ड डिस्क रे स्टोर अछि. गोटे फ्लॉपी डिस्क यूज करंती, कंपैक्ट डिस्क जो सीडी जोटा कहंती से भी गोटे सेकेंडरी स्टोरेज. तमे जो पेन ड्राइव यूज करूछ से भी गोटे सेकेंडरी स्टोरेज. तमे जो मोबाइल रे जो एसडी कार्ड पकुछ बा कैमरा जो एसडी कार्ड पकुछ बा सिक्योर डिजिटल कार्ड पकुछ डाटा रो आल्सो सेकेंडरी स्टोरेज. ताले सेथे जदी इंफॉर्मेशन रही जाउची तो कंप्यूटर जदी पावर ऑफ होउची भी ताले इंफॉर्मेशन सेथरो कटु नाही. So right answer is option C. Okay, next question for you. The dash folder retains copies of messages that you have started but are not yet ready to send. The dash folder retains copies of messages that you have started but are not ready to send. को फोल्डर रे हमर मेसेज गुडा को रही जाई पारे किंतु जोटा सेंड ही न थाए, जोटा सेंड ही पार न थाए. The dash folder retains copies of messages that you have started but are not ready to send. सेथरे रही थाए बट सेटा सेंड ही पार न थाए. ऑप्शन ए ड्राफ्ट्स, ऑप्शन बी आउटबॉक्स, ऑप्शन सी एड्रेस बुक, ऑप्शन डी इनबॉक्स and option E none of these. The dash folder retains copies of messages that you have started but are not yet ready to send. You give as A. Yes, that is right answer. Draft. Draft रे जो मेसेज टा में रखी पठाई जाय थाए पर सेटा रेडी थाए सेंड हे पान थाए. आउटबॉक्स माने जोटा ऑलरेडी बाहरिला. एंड एड्रेस बुक तो सेटा डिफरेंट जिंस एड्रेस को स्टोर करिया पे. इनबॉक्स माने आमको जे मेसेज पठाए सेटा स्टोर हुए. तो आउट भी स्पैम थाए जोटा जाई पारि न थाए स्पैम रे पड़ी जाय थाए. एंड जोटा हमें डिलीट कर दी थाउ सेटा डिलीटेड ही थाए. जोटा को हमें एई टाइप रो सब जिंसोडा को हमर साधारणतः ईमेल भीतर देखिया को मिले. सो दिस ऑप्शन ड्राफ्ट इज द राइट आंसर. And the draft folder retains copies of messages that you have started but not yet ready to send. So option A is the right answer. Okay, next question for you. Which of the following must be contained in a URL? Which of the following must be contained in a URL? एमानक भितरु URL भितरे कोनटा थाए? Option A protocol identifier, option B the letters www, option C the unique registered domain name, option D www dot and the unique registered domain name, and option E none of these. Which of the following must be contained in URL? जस्ट टिके मु रिमाइंड कर दोची. इंटरनेट एड्रेसिंग रे चारटा जिंस हमको सुने को मिले. गोटे होची हमर एनआईसी बा जोटा को आइडेंटिफाई करे पे मैक एड्रेस यूज करा जाय. देन होची गोटे आईपी एड्रेस, गोटे होची डोमेन नेम्स आ गोटे होची यूआरएल. ताले जो यूआरएल हमें कहूचे से यूआरएल भितरे कोनटा निश्चित भाबे थाए. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई. व्हिच इज द राइट आंसर?
uniform resource locator must contain which among of the following? Anyone can give the response? The right answer is option D, www dot and the unique register domain name. जेमति कि हमें कहू www dot microsoft dot com. ताले एठी लेटर्स www कैपिटल लेटर रे केबे तो इंटरनेट एड्रेसिंग करा जाए नहीं, सबले स्मॉल लेटर ही करा जाए. तो www बा www स्मॉल लिखी डॉट तापर जोटा डोमेन नेम ता पका जाए, जेमति कि www dot microsoft dot com कि www dot बीजेपी जूनियर कॉलेज डॉट edu जहां भी हो ए टाइप रे पका जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Which key is used in combination with another key to perform a specific task? Which key is used in combination with another key to perform a specific task? आमे गोटे स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट करबा को चाहूचे ताले को की को आमे कॉम्बिनेशन को नबा जहा कि हमको सेटा हेल्प करिवो. ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी एरो, option C, option D space bar and option E none of these. Which key is used in combination with another key to perform a specific task? गोटे स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करबा कोले हमें को की कॉम्बिनेशन को यूज करू. एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज द राइट आंसर? That is the control key बा CTRL की. तमे कीबोर्ड रे alt control एवं shift ए जो तीनटा की थाए ताकू कहंते हमर स्पेशल की. स्पेशल की माने तांकर निजस्व किछि काम न थाए, से गोटे अन्य गोटे की से तो कंबाइंड होंती किछि गोटे काम करिया पे. हमें शॉर्टकट की गुडा को जाऊ प्राय देखू, प्राय तो कंट्रोल शिफ्ट alt ए तीनटा को बेस करी हेताए. तो कीबोर्ड रे जो विभिन्न प्रकार की हमर थाए जेमति कि न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की, अल्फाबेट की, तमरा आरो कीज बा जोडा को नेविगेशन कीज जहां भी हो. तो ये जो कंट्रोल ऑल्ट एवं शिफ्ट ताको गोटे कहंती स्पेशल की. तो ता द्वारा किछि गोटे स्पेशल काम करा जाय थे, आ गोटे कहा से कंबाइन नै कि से गोटे किछि स्पेशल काम करन. जेमते कंट्रोल सहित ए मारले सिलेक्ट ऑल हुए, ऑल सहित एच मारिले हमर होम टैब एक्टिव हो जाए. हां, तो जहां भी हो दैट आर नोन एज द स्पेशल कीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Which of the following will you require to hear music on your computer? Which of the following will you require to hear music on computer? तमे कंप्यूटर रे म्यूजिक सुनिबा कोले एमान को भितर कहा को व्यवहार करिवो. ऑप्शन ए वीडियो कार्ड, ऑप्शन बी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी साउंड कार्ड एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. एनीवन? Which of the following will you require to hear music on computer? The right answer is option D, sound card. Sound card नथिले हमें म्यूजिक बाजिबो नाही. So option D is the right answer. Okay, next question for you. The web layout view is available in which Office 2013 application? The web layout view is available in which Office 2013 application? Web layout view टा को एप्लीकेशन पई अछि. ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी एसेस, ऑप्शन डी पावर पॉइंट एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. The web layout view is available in which Office 2013 application? Anyone can give response? The right answer is B, word. Word रही हमरो वेब लेआउट व्यू अछि, माने वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू. तो एई प्रकार सब जो 5-6 प्रकार व्यू सब किछि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे ही देखिया को मिले. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. डैश प्रोड्यूसेस प्रिंट आउट ऑफ ए डाटा इन यूजर डिफाइंड मैनर. डैश प्रोड्यूसेस प्रिंट आउटपुट ऑफ ए डाटा इन यूजर डिफाइंड मैनर. यूजर जो अनुसार चाहू थाए एमान को भितर किए से टाइप रो डाटा को प्रिंट करके देई पारे. ऑप्शन ए क्वेरी लैंग्वेज,
ऑप्शन बी डीएमएल, ऑप्शन सी रिपोर्ट जनरेटर, ऑप्शन डी डीसीएल, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. Dash produces print out of a data in user defined manner. यूजर जो अनुसार चाहे एमान को भितर किए से डाटा को सही टाइप रो प्रिंट आउट करके देई पारे. Anyone can give response? Query language, option B DML, option C report generator, option D DCL, and option E none of these. The right answer is C report generator. ताले आमर database रो जो report कहंती, report is used to print our database data in printed format. ताले गोटे database रो data को जदि printed format रे बा printing format रे हमें बाहर करिबा को चाहूतिबा ताले सेति पय हमको report रो यूज करिया को पड़िबो. query भी अछि, query व्यवहार कर जे analysis करिया पय आउ फॉर्म तो व्यवहार करे जे डाटा एंट्री काम को सिंपलीफाई वे रे करिया पय. एग्जैक्टली सेमती हमर जोटा रिपोर्ट थाए, report is used to print our database data in printed format. ताले आमे जेमति चाहूतिबा you can control the size and appearance of everything on a report. केते बडो साइज रे बाहरिबो, ता डिजाइन ता केमिति आसीबो, ता कलर स्कीम केमिति रहिबो, एवरीथिंग आमे सब रिपोर्ट माध्यम रे ही डिफाइनिंग करू. ताले रिपोर्ट को ही प्रिंटिंग फॉर्मेट रे बाहर करिया पे यूज करा जाय. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आउ डीएमएल डीसीएल सेडा तो आमे जानि छे एसक्यूएल रे सब विभिन्न कमांड यूज करा जाय. डीएमएल डीसीएल टीसीएल डीडीएल नहीं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, एडा तो सब एसक्यूएल रो कमांड गुडा को से किछि नुए. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच सिक्योरिटी मॉडल इज यूज्ड इन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क? व्हिच सिक्योरिटी मॉडल इज यूज्ड इन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क? गोटे पीयर टू पीयर नेटवर्क रे एमान के भितर को सिक्योरिटी मॉडल को यूज करा जाय? ऑप्शन ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयर्स, ऑप्शन बी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, ऑप्शन सी शेयर लेवल सिक्योरिटी, ऑप्शन डी यूजर लेवल सिक्योरिटी, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. व्हिच सिक्योरिटी मॉडल इज यूज्ड इन पीयर टू पीयर नेटवर्क? हम विभिन्न प्रकार नेटवर्क विषय जानि छी. तो पीयर टू पीयर नेटवर्क भितरे एमान के भितर को सिक्योरिटी मॉडल को यूज करा जाय? एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स. पीयर टू पीयर माने ए गोटे नेटवर्क आ गोटे नेटवर्क अछि. पीयर माने जो नियर कहंती, बट नियर एंड डियर पीयर कहंती. तो जहां भी हो से जो जिंस बेले हमको कोटा को सिक्योरिटी मॉडल ता यूज करा जाय? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग आल्सो. व्हिच सिक्योरिटी मॉडल इज यूज्ड इन पीयर टू पीयर नेटवर्क? ऑप्शन ए password protected shares, option B access control lists, share level security, option D user level security, and option E none of these. You have give the response as a share level. Wrong answer. Option A is the right answer. Password protected shares. तमे पासवर्ड न देले तमे से जो नेटवर्क भितर पसी परिबनी. तो से लॉगिन पासवर्ड मागे, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करिबा पई मागे. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ए हायरार्चिकल डाटा मॉडल combines records and files that are. A hierarchical data model combines records and fields that are. गोटे हायरार्चिकल मॉडल जो थिरे कि कंबाइन करा जाय रेकॉर्ड आ फील्ड गुडा. रेकॉर्ड तुम पूर्व भी बहुत आगु कहि छी. गोटे डाटाबेस रो भाषा दे टेबल टाको हमरो रिलेशन बोली कह जाए, एवं से जो टेबल फॉर्मेट रे कॉलम वाइज जो डाटा गुडा एंट्री हुए ताको गोटे फील्ड बोली कहंती बा एट्रिब्यूट बोली कहंती, एवं प्रति रो वाइज जो गुडा आसे ताको गोटे रेकॉर्ड बोली कहंती बा ट्यूपल बोली कहंती. ताले गोटे हायरार्चिकल डाटा मॉडल रे कंबाइन्स रेकॉर्ड्स एंड फील्ड्स सेटा कोन कहंती? ऑप्शन ए क्रॉस स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी ट्री स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी लॉजिकल मैनर, ऑप्शन डी रिलेशनल स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज. से एग्जैक्टली से जिनसटा को कोन बोली कहंती? ए हायरार्चिकल डाटा मॉडल combines records and fields that are. Anyone? The right answer is this one, logical manner. हमरो देखिबो डाटाबेस जे हम फील्ड तयारी करू तापय कि डाटा टाइप सब थाए, जेमति कि
को जगह केवल ओनली टेक्स्ट बा नंबर को हमको एंट्री करिवार अछि मिसै कि ताले टेक्स्ट टाइप रो डाटा कोठी केवल नंबर नबार अछि टेक्स्ट नबार नै ताले नंबर नबाक पड़िबो कोठी कोठी हमको डेट एंड टाइम रिलेटेड डाटा उडा नबार अछि ताले डेट एंड टाइम नबाक पड़िबो कोठी कोठी हमको बुलियन वैल्यू नबार अछि ताले लॉजिकल डाटा टाइप होछि सुइटेबल ताले डाटाबेस रे जो फील्ड जो अनुसार जनरेट होइताय से फील्ड से अनुसार डाटा ही नहीं थाए जदि डेट जगह तमे टेक्स्ट लिखिबो चाहिबो से नबो नाही कि नंबर जगह तमे जदि चाहिबो डेट दबा पई नबो नाही काई ना डेट रो फॉर्मेट होछि दिन मास वर्ष मझिरे हाइपेन पडुथो बा स्लैश पडुथो ताले जनरल नंबर फॉर्मेट रे जदि डेट एंट्री करबो नबो नाही तमे डेट रे जदि नंबर दोथबो नबो नाही जहा भी हो सेटा गोटे लॉजिकल मैनर रे समान थांती बा तार गोटे रूल थाए सेही रूल अनुसार से फील्ड डाटा ग्रहण करे से रो कॉलम हो बा फील्ड हो बा रिकॉर्ड हो बा रो हो जहां भी डाटा ग्रहण करिवो लॉजिकल मैनर रे ग्रहण करिवो ओके an object oriented database does not depend upon dash for interactions an object oriented database doesn't depend upon dash for interactions option A oracle option B SQL option C index option D DBMS option E none of these an object oriented database doesn't depend upon dash for interactions गोटे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस कहा ऊपर डिपेंडेंट हुए नहीं ओरेकल एसक्यूएल इंडेक्स डीबीएमएस नॉन ऑफ दिस एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स ऑप्शन बी SQL SQL बा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज रे एटा डिपेंडेंट नुह आन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस डजंट डिपेंड अपॉन SQL फॉर इंटरैक्शंस ओके व्हिच इज कॉमन बैकस्टेज व्यू टास्क क्रिएट्स ए पीडीएफ फाइल फ्रॉम एन एक्सटेंशन फाइल तमे सब पीडीएफ कन्वर्ट करूछ नहीं जो पीडीएफ फाइल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट कहूछ से पोर्टेबल डॉक्यूमेंट को हमको करबा को हेले व्हिच कॉमन बैकस्टेज व्यू टास्क क्रिएट्स ए पीडीएफ फाइल फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग फाइल हमर वर्ड रोटे फाइल तयारी करछे बा एक्सेल रोटे फाइल तयारी करछे ताको पीडीएफ को कन्वर्ट करिया को चाहूछे ताहले एमान को भीतर बैकस्टेज रे को कामडा चले ऑप्शन ए एक्सपोर्ट ऑप्शन बी अकाउंट ऑप्शन सी क्रिएट ऑप्शन डी ऑप्शंस ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एनीवन which thing can be used option A is the right answer export way which common backstage view task creates a pdf from an a ठीक export हुए export हैला परे सेटा हे जाय ठीक export हैला परे ऑटोमेटिकली सेटा कन्वर्ट हे जाय राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which device operates at the internet layer of the TCP by IP model which device operates एमान को भीतर को डिवाइस ऑपरेट हुए TCP by IP layer रे switch and hop option B router option C switch option D firewall option E none of these which device operates at the internet layer of the TCP by IP model TCP by IP model रे एमान को भीतर को लेयर टा काम करे सॉरी को डिवाइस टा काम करे स्विच एंड ऑफ ऑप्शन बी रूटर ऑप्शन सी स्विच ऑप्शन डी फायरवॉल एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस एनीवन दैट इज द रूटर रूटिंग करे माने एपड़ गोटे चली पुणी ताकू किछि डायरेक्शन को चेंज करिवो सो दैट इज द रूटर ही से जिंसटा को चेंज कराए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए कोडिंग स्कीम recognized by system software for representing organizational data is a called a coding scheme गोटे कोडिंग स्कीम जहा को व्यवहार करा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करिया पे ऑर्गेनाइजेशनल डाटा इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को रिप्रेजेंट करिवो से ताको एग्जैक्टली कोन बोली कहंदी ऑप्शन ए डाटा टाइप
ऑप्शन बी डाटा साइज, ऑप्शन सी ट्रिपल, ऑप्शन डी hyperlink, and option E none of these. A coding system recognized by system software representing organizational data. आम ऑर्गेनाइजेशन किसी डाटा को एंट्री करने को चाहूँगी गोटे फॉर्मेट को आम यूज करवा जो फॉर्मेट रे कि से अप्रोप्रिएट वे रे डाटा गुडा को नबो जे एठी डेट दहबो एठी टाइम रिलेटेड जिंस दियाबो कि टेक्स्ट रिलेटेड जिंस दिया जिवो कि नंबर रिलेटेड जिंस दिया जिवो कि लॉजिकल रिलेटेड जिंस दिया जिवो ताले एग्जैक्टली से जिंसटा को हमें कोन बोली कहंदी यू हैव गिव रेस्पॉन्स एज हाइपरलिंक नो हाइपरलिंक नुहे एग्जैक्टली से जिंसटा को हमें कोन बोली कहू डाटा टाइप बोली कहिताऊ डाटा टाइप माने को प्रकार डाटा से कैरी आउट करिवो हमर माइक्रोसॉफ्ट एसेस को गले देखिवो गोटे डाटा एपटे थिबो गोटे फील्ड नेम तापर गोटे डाटा टाइप थिबो तापर डिस्क्रिप्शन थिबो से डाटा टाइप रे सब चूज करिया पे थिबो टेक्स्ट मेमो नंबर डेट एंड टाइम तो जहां भी हो से ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को हम गोटे फीड करेबा रिकॉग्नाइज से करिवो लॉजिकल मैनर रे so that is known as data type. Option A is the right answer. Next question for you, which phase of the SDLC involves converting to the new system? Which phase of the SDLC involves converting to the new system? Question number 9, which phase of the SDLC involves converting to the new system? एमान को भीतर कोटा न्यू सिस्टम को कन्वर्ट करिया पई एलएसडी से एलडीएस से आस्ता है एनीवन ऑप्शन ए सिस्टम्स डिजाइन ऑप्शन बी सिस्टम्स एनालिसिस ऑप्शन सी सिस्टम्स डेवलपमेंट ऑप्शन डी सिस्टम कोड एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज एनीवन कैन गिव रेस्पॉन्स The right answer is S. You have give right answer that systems design S. ताकु सही phase रे हमारा new system को हेले system तो design करिया को पड़िबो ना obviously. So systems design option A is the right answer. Okay, next question for you. An IP protocol field of 0 into 06 indicates that IP is carrying what as its payload. An IP protocol field of 0 into 06 indicates that IP is carrying what as its payload. Option A UPD by IGRC, option B UPD, option C ICMP, option D TCP, and option E none of these. Very simple question and internet रो एटा बहुत गोटे vital part भी. An IP protocol field indicates that IP is carrying what its payload. Anyone? The right answer is TCP, Transmission Control Protocol. हमें सब बोले कहू ना TCP by IP. ताले IP protocol टा सब बोले TCP पर डिपेंडेंट हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नो दैट इज दिस थिंग TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओके द राइट आंसर इज TCP बाय IP को जे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू when entering text within a document the enter key is normally pressed at the end of every कौन ऑप्शन ए लाइन ऑप्शन बी सेंटेंस ऑप्शन सी पैराग्राफ ऑप्शन डी वर्ड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस केते बडे क्रिटिकल क्वेश्चन पर तुम पई बहुत के सिंपल क्वेश्चन कर दोची एबे तमे को जे हमें गोटे टेक्स्ट ता एंटर करले गोटे डॉक्यूमेंट रे द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड हमें एंटर की को प्रेस करबा एंटर मान त हमें जानि छ ओके तो आ भीतर को ऑप्शन ता हवा राइट आंसर Option A line, option B sentence, option C paragraph, option D word, and option E none of these. Anyone can give response? The right answer is option C. Option C टा होचे right answer. काहेकि ना line पर तो से line ही चले माने
आ गोटे जति मार्जिन पड़िथिबो लाइन टा फिल अप होला को मनु मन से तो फेई जीवो हमको एंटर की प्रेस करिया दरकार नै काइना से आगु को जीव नै काइना सेटा कोड वर्ड रैपिंग फीचर बोली कहंती हमरो रैप माने फिट द टेक्स्ट विद इन द डिफाइंड मार्जिन भीतर लेखाटा ही रहिबो से केबे मार्जिन को क्रॉस करि जाई परिबो नै सो ए तो हबो नै बी होची सेंटेंस आमे लिखिले वाक्य मझिरे गोटे बिंदु पकीले सेटा इंटर मारिया किछ माने ही नै काइना पूरी सेंटेंस ता फुल स्टॉप पकेला पर आमे लिखि चलिबा तो नुहे वर्ड तो स्पेस दे दे लिखिया पड़िबो तो ऑब्वियसली पैराग्राफ माने एठी मोर पांचटा कि सातटा लाइन को गोटे पैराग्राफ खोली तापर गोटे पैराग्राफ मते करिवार अछि तो हमको निश्चित भाबे एंटर की को प्रेस करिया को पड़िबो सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पैराग्राफ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू computers that control processes asset data in a continuous कोन कंप्यूटर दैट कंट्रोल प्रोसेसेस कंप्यूटर जहा की कंट्रोल करे प्रोसेस गुडा को एसेट डाटा कंटीन्यूअस भाबे केमती ऑप्शन डी डाटा ट्रैफिक पैटर्न ऑप्शन बी डाटा हाईवे ऑप्शन सी इनफिनाइट लूप ऑप्शन डी फीडबैक लूप एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज anyone can give response computers that control processes asset data in a continuous कंप्यूटर जहा की प्रोसेसिंग करे डाटा गुडा को जहा की कंटीन्यूअस भाबे कोन करि थाए माने कंप्यूटर जो डाटा एक्सेप्ट करे एंड कंटीन्यूअस वे रे एक्सेप्ट डाटा करूथिबो प्रोसेस करूथिबो तले सेटा को एग्जैक्टली कोन कहंती सेटा को एग्जैक्टली आमे कहि थाउ कोन ना फीडबैक आमे जदि किछि फीडबैक न दबा से हबनी नॉट डाटा हाईवे नुह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फीडबैक दबा को पड़िबो माने कंप्यूटर्स कंट्रोल प्रोसेसेस डाटा को तमे देलो फीडबैक पुनी से नबो ना फीडबैक ए हला तापर पुनी फीडबैक देलो ताले कंटीन्यूअसली कामटा चलिबो तमे किछि दउथुबो से किछि करूथुबो तमे किछि दउथुबो से किछि करूथुबो ताले दैट इज द फीडबैक लूप फीडबैक हवा द्वारा फीडबैक कहंदिनी तू मु तो गोटे एते थरा गोटे फोन कलानी तू तोर गोटे फीडबैक नाही किछि माने interaction chalithibo okay next question for you a dash is a special visual and audio effect applied in PowerPoint to text or contents a dash is a special visual and audio effect what special ebo visual মানে either সেটা দেখা ଯିବ বা কিছু শব্দ শুনা ଯିବ সেই বলি কিছু अप्लाई করা ଯିବ PowerPoint रे লেখা গুডা को जो थिबो बा आउ जहा पिक्चर जहा भी कंटेंट्स अछि ताको अट्रैक्टिव वे रे करिया पई एमान भीतर कोन यूज करा जे एग्जैक्टली से जिंसटा कोन ऑप्शन ए एनिमेशन ऑप्शन बी क्लास ऑप्शन सी वाइफ ऑप्शन डी डिसॉल्व एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज ए डैश इज a special and visual and audio effects applied in PowerPoint to text or contents पाई हमें PowerPoint रे अप्लाई करिबा जो स्पेशल विजुअल इफेक्ट ताको एग्जैक्टली हमें कोन बोली कहिबा एस यू हैव गिव रेस्पॉन्स ताको कहंदी एनिमेशंस माध्यम रे हमको किछि विजुअल बा ऑडियो इफेक्ट्स दबागु पड़े तो एनिमेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए पर्सनल कंप्यूटर बा पीसी गुडा को जहा की कनेक्टेड हुंती टुगेदर बा एकाठी की कनेक्टेड हुंती कोन करिबा पई ऑप्शन ए सर्वर ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर्स ऑप्शन सी नेटवर्क ऑप्शन डी एंटरप्राइज ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज पर्सनल कंप्यूटर्स बा पीसी गुडा को परस्पर सहित कनेक्टेड हुंती कोन करिबा पई एस you have give right response that option C network several computers connected together for the purpose of sharing data or softwares that is known as a network yes option C is the right answer network boli taku kahanti right answer okay a dash is the term used when a search engine returns a web page that matches to the search criteria is dash in the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria एमान के भितर कौन से टर्म ता जहा कि हमें सर्च इंजन क्षेत्र रे व्यवहार करथौ जहा कि निर्दिष्ट गोटे वेब पेज को रिटर्न करथाय हमें जो अनुसार क्राइटेरिया बा कंडीशन अनुसार सर्च करथौ
Option A, block. Option B, hit. Option C, link. Option D, view. Option E, none of these. A dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria. Question number 5. You have you give as a link. Wrong answer. The right answer is hit. The hit is the term used when a search engine returns a web page that matches to the search criteria. माने आमे गोटे गोटे लेटर हिट करिबा माने जेमति कि ए लिखला को ए रिलेटेड आसतो ए आन आट आमे जोटा को हिट करिबा बा जोटा को कोन करिबा चूज कर दबा सेही अनुसार सेटा से माने सेही क्राइटेरिया अनुसार खोजि दबो बा सेही क्राइटेरिया को नेकी सर्च इंजिन रो खोजि दबो आमे जे गूगल रे खोजुचे कि याहू रे खोजुचे कि अल्टा विस्ता रे खोजुचे कि लाइकस रे खोजुचे से जो टर्म ता एग्जैक्टली गोटे टर्म पकेला को ए आन आट मन को आन करियो हिट करियो ता ऊपर हिट कर देले बा ता ऊपर को ये कर देले क्लिक कर देले से सही क्राइटेरिया अनुसार सर्च इंजिन रो जिंस खोजि दबो ओके forms that are used to organize business data into rows and columns are called forms that are used to organize business data into rows and columns forms जहाँ कि हमें व्यवहार करियो बिजनेस डाटा गुडा को ऑर्गेनाइज करिया पे रो और कॉलम वाइज रे ताको एग्जैक्टली हमें कोन बोली कहू ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन शीट ऑप्शन बी रजिस्टर्स ऑप्शन बी सी बिजनेस फॉर्म्स ऑप्शन डी शीट स्प्रेड्स एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज forms that are used to organize business data into rows and columns are called ताको एग्जैक्टली कौन कहती रजिस्टर रजिस्टर को तो रो और कॉलम वाइज कौन रखा जाए कि नुहे तो रोज एंड कॉलम्स रे बहुत हाँ एस यू हैव गिव रेस्पॉन्स राइट एज डी सीट स्प्रेड्स बा स्प्रेड सीट बोली ताको कहती तो सही भली जिंस माध्यम रे आमे रो और कॉलम वाइज डाटा एंट्री करू तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग तमे सब कहो mp3 गीत व्हाट इज द mp3 व्हाट इज द mp3 वेरी वेरी सिंपल थिंग ए माउस ऑप्शन बी ए प्रिंटर ऑप्शन सी ए साउंड फॉर्मेट ऑप्शन डी ए स्कैनर ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज व्हाट इज mp3 व्हाट इज mp3 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन What is MP3? हमें MP4 को MP3 को ताले MP3 टा एग्जैक्टली कौन क्वेश्चन नंबर 7 What is MP3? MP3 एग्जैक्टली कौन Anyone can give response? You have give response as a C S that is a sound format हमरा विभिन्न प्रकार फॉर्मेट है ना MPEG हमारा वीडियो फॉर्मेट पाई मूविंग पिक्चर्स एक्सपोर्ट ग्रुप जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप गोटे वीडियो फॉर्मेट MP4 से भी गोटे वीडियो फॉर्मेट AVI नहीं कि से भी गोटे वीडियो फॉर्मेट नहीं ठीक सेमती जो MP3 हमें कहू एग्जैक्टली दैट इज MP3 तापरे REC नहीं कि तो एई टाइप रो जो जिंसडा सब यूज करा जाय बेसिकली ओडा सब साउंड फॉर्मेट केवल वॉइस पाई केवल माने साउंड सुनिया पाई एटा यूज करा जाय दैट इज अ साउंड फॉर्मेट सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू वायर ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जिंस ऑप्शन ए रिसाइकल बिन ऑप्शन बी टास्क बार ऑप्शन सी टूल बार ऑप्शन डी माय कंप्यूटर ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज all deleted files go to where yes the right answer is recycle bin all have given the right answer recycle bin is just like your dustbin all the unnecessary files folders programs that we have deleted that is stored inside the recycle bin and that is a navigational tool and that is also a system icon in the Microsoft Windows okay recycle bin is the right answer next question for you RAM is a dash and a dash. RAM is a dash and dash.
राम तो शुणी थी सेटा कौन राम माने तुम भावना कि मु आम प्रभु श्रीराम को कथा पचारुछि कंप्यूटर पार्ट कथा कहूछि राम इज ए डैश एंड डैश ऑप्शन ए वोलाटाइल टेम्पररी ऑप्शन बी नॉन वोलाटाइल परमानेंट ऑप्शन सी नॉन वोलाटाइल टेम्पररी ऑप्शन डी volatile and permanent and option E none of these. Question number 9, which is the right answer? Yes, the right answer is option A. Option A is the right answer, that is volatile and temporary. मु तुमको प्रथम कहि आछि RAM होछि गोटे प्रकार प्राइमरी मेमोरी रे डाटा परमानेंटली स्टोर हेई पारे नाही शो volatile प्राइमरी मेमोरी को अदरवाइज हम बहुत ना रे कहू जेमति कि मेन मेमोरी कहंती एक्टिव मेमोरी कहंती volatile मेमोरी कहंती इंटरनल मेमोरी कहंती तो ताको volatile हेला भी तापे टेम्पररी कारण हमें जानले प्राइमरी मेमोरी डाटा परमानेंटली स्टोर हेई पारेनी कंप्यूटर जे पर्यंत पावर सप्लाई ऑन थिबो सब किछि प्राइमरी मेमोरी थिबो कंप्यूटर स्विच ऑफ होबा सहित प्राइमरी मेमोरी भी डाटा नष्ट होई जिवो so option A is the right answer, that is volatile and temporary. Okay, next question for you, which of the following is an example of an optical disc? एमानक भितरु कोउटा गोटे ऑप्टिकल डिस्क रो एग्जांपल ऑप्शन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क ऑप्शन सी मेमोरी डिस्क ऑप्शन डी डाटा डिस्क ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस which of the following is an example of an optical disc एमानक भितरु कोउटा होछि गोटे ऑप्टिकल डिस्क you have give as B. Which of the following is an optical disc? एमानक भितर कोउटा को ऑप्टिकल डिस्क बोली कहंती ऑप्शन ए इज द राइट आंसर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बा जोटा को अदरवाइज हमें डीवीडी बोली कहू तमे देखिथिबो गोटे राउंडेड मेटालिक डिस्क पिला बेले समस्त निश्चित भाबे देखिथिबो गोटे राउंडिंग हेतिबो एवं ता ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड रो कोटिंग देते माने रामपुडी देले जिको भलिया छाडी जाय से मैग्नेटिक ऑक्साइड रे कोटिंग रे द्वारा ही सितरे डाटा ट्रैक आउ सेक्टर द्वारा रिकॉर्डिंग होइथे बा डाटा स्टोरिंग हेइथे तो से जो सीडी आउ डीवीडी बेसिकली ताको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कर जहार आईटी थिबो से भी जानि थिबो हमर जो सेकेंडरी स्टोरेज को हेची सीक्वेंशियल एक्सेस पई कराइ छ ऑप्टिकल डिस्क पई कराइ छ एंड एटा ऑप्टिकल डिस्क के कैटेगरी रे आसुची डिजिटल वीडियो डिस्क बा जोटा कहंते डीवीडी तो डीवीडी बा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहंते अदरवाइज ऑप्टिकल डिस्क ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू large collection of structured data and can be used in different applications is called large collection of structured data and can be used in different applications is called large collection of structured data structure में सजाई कि थिबा डाटा उडा को जहा कि डिफरेंट एप्लीकेशन पई यूज करा जाई पारे एग्जैक्टली से जिंसटा को हमें कोन बोली खो ऑप्शन ए डाटाबेस मैनेजमेंट ऑप्शन बी मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन सी डाटाबेस option D data storage system and option E none of these large collection of structured data and can be used in different applications is called and that can be used in different applications you have give us database management system तो सेमती किछि ऑप्शन ही नहीं एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर्ड डाटा को हमें डाटाबेस बोली कहितो डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन organized in such a way so as to make it easy to view search and retrieve data as per our requirement activities that are routinely performed with a database including adding editing deleting finding sorting querying and reporting information ताले से जो लार्ज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा को एग्जैक्टली हमें कोन बोली कहिताउ ना डाटाबेस बोली कहिताउ ऑप्शन सी टा होची राइट आंसर that is known as a database is collection of informations organized in such a way so as to make it easy to view search retrieve as per required देखिबा
खोजिबा एवं डाटा पुनरुद्धार काम करबा सहज होई थाए आउ से डाटा को हमें चाहिए नुआ फॉर्मेट डाटा ऐड करि पारुचे एडिट करि पारुचे अननेसेसरी भी डिलीट करि पारुचे ताकू आमे परवर्ती मुहूर्त रे चाहिए क्वेरी भी एनालिसिस भी करि पारुचे सब डाटाबेस ही एग्जैक्टली कह जाए डाटाबेस ओके तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर डाटाबेस बोली कह जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन कलर स्क्रीन 2 bits आर नीडेड फॉर ऑन कलर स्क्रीन आमे जो कलर स्क्रीन यूज करूचे 2 bits आर नीडेड फॉर ऑप्शन ए 2 colors ऑप्शन बी 4 colors ऑप्शन सी 8 colors ऑप्शन डी 12 colors ऑप्शन ई none of these on color screen 2 bits are needed for गोटे कलर स्क्रीन रे 2 bits को हमें यूज करू तो कौन पाई ऑप्शन ए 2 colors ऑप्शन बी 4 colors ऑप्शन सी 8 colors ऑप्शन डी 12 colors and ऑप्शन ई none of these 2 bits are needed for 2 bits हम दरकार पड़े कौन पाई ऑप्शन एस यू हैव गिव राइट रिस्पांस दैट ऑप्शन बी 4 colors 4 colors को जनरेट करिया पे एटा को हमर यूज करा जाय सिंबल्स सच एज लेटर्स और एनी डिजिट आर कॉल्ड सिंबल हो बा लेटर गुडा को जहा की बा गोटे डिजिट हो ताको कोन बोली कहंती ऑप्शन ए कैरेक्टर्स ऑप्शन बी स्मॉल बिट्स ऑप्शन सी small bytes option D output characters and option E none of these symbols such as letters or any digit are called symbol गुडा को जहा कि otherwise letter भी हमें 800 पर्यंत ही पारे digit गुडा को ही पारे 0 ठार 9 पर्यंत ही पारे जहा भी हो ताको कंप्यूटर भाषा रे एग्जैक्टली हमें कोन बोली कहू anyone can give response option A option B option C option D या फिर ऑप्शन ई व्हिच इज द राइट आंसर symbols such as letters or any digit are called you have give response as option D no that is wrong the right answer is option A character बोली कहंती ताको गोटे character बोली कहंती तो character is a thing that is enclosed with a pair of single quote आउ जब डबल कोट भीतर लिखा हला ताको स्ट्रिंग बोली कहंती तो जहाँ भी हो गोटे सिंबल ही पारे जेमति कि तमे ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू प्लस लेटर भी ही पारे ए थर जेड पर्यंत जहाँ भी ही पारे ताको गोटे गोटे हमें कंप्यूटर भाषा कैरेक्टर्स बोली कहंती एटी चरित्र नुहे एटी कंप्यूटर भाषा कैरेक्टर बोली ताको कहंती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू प्रोग्राम्स यूज्ड टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस आर क्लासिफाइड एज programs used to control system performance are classified as programs जहाँ की व्यवहार करा जाए कंट्रोल करिया पई सिस्टम परफॉर्मेंस को सिस्टम रो परफॉर्मेंस बा सिस्टम रो कार्य दक्षता को कंट्रोल करिवा पई जो प्रोग्राम गुडा का यूज करा जाए एग्जैक्टली ताको हमें कोन बोली कहू ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स ऑप्शन बी सिस्टम प्रोग्राम्स ऑप्शन सी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज anyone the right answer is option B system programs ताले सिस्टम प्रोग्राम्स ही सिस्टम को कंट्रोल करे ता सिस्टम सॉफ्टवेयर बोली भी कहंती तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चारटा जिंस थाए तमरो बायोस ओएस डिवाइस ड्राइवर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर तो आउ से जो जिंस गुडा को पेशर परे केबे डिस्कशन करिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इफ नंबर ऑफ वंस इन एनी बिट स्ट्रिंग आर इवन देन बिट्स स्ट्रिंग partially to classified as if the number of ones in any bit string are even then bit string partly is classified as कौन बोली कहंती जदी गोटे नंबर वंस माने गोटे बिट हमरो गोटे पल्स थाए गोटे नॉन पल्स थाए ताले सिटा कौन बोली कहंती ऑप्शन ए ऑड पार्टी एंड ऑप्शन बी इवन पार्टी option C zero party option D double party and none of these anyone जदी इवन थिबो ऑब्वियसली ताको इवन ही पजिबो ना इवन पार्टी आ कोन
Okay, next question for you. A diagram which is used to show logic elements and their interconnections is said to be. गोटे डायग्राम को हमें व्यवहार करथाउ लॉजिक एलिमेंट गुडा को देखैबा पई एबो समान को इंटरकनेक्शन गुडा को देखैबा पई ताकू कोन बोली एग्जैक्टली कहंती. ऑप्शन ए सर्किट डायग्राम, ऑप्शन बी सिस्टम डायग्राम, ऑप्शन सी लॉजिक डायग्राम, ऑप्शन डी गेट डायग्राम and option E none of these. Anyone? The right answer is logic diagram बोली ताकू कहंती. Okay, logic diagram काहेकि ना लॉजिकल एलिमेंट गुडा नबा माने ऑब्वियसली लॉजिक डायग्राम आ कोन way in which computers are organized in multi access is classified as. जो बाटरे कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करा जेते बा साजिश करते मल्टी एक्सेस करिया पई विभिन्न वे रे एक्सेसिंग करिया पई ताकू कोन कहंती. ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी रेस्पॉन्स शेयरिंग, ऑप्शन सी मल्टीटास्क शेयरिंग, ऑप्शन डी टाइम्ड शेयरिंग and option E none of these. Way in which computers are organized in multi access is classified as. You give as a see kai multitasking sharing अछि बोली ना ताकू एग्जैक्टली कहंती टाइम शेयरिंग ताले गोटे सिस्टम को हमें मल्टी एक्सेस करिया माने ये कामटा कोटा हबा गो से कामटा का तापरे हबो को समय रे कोन हबो सेटा को कहंती एग्जैक्टली टाइम शेयरिंग कहा पई को समय केते समय सब से शेयरिंग करे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 द राइट आंसर इज ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. स्पेशल नेटवर्क to communicate data in a packets is called as. Special network to communicate data in a packet is called as. Special network जहाँ की गोटे पैकेट सहित कम्युनिकेशन करबा पई व्यवहार कर जाय ताको एग्जैक्टली कोन बोली कहंती. पैकेट स्विच्ड सर्विस, ऑप्शन बी लॉजिकल पैकेट्स, ऑप्शन सी पैकेट स्विच्ड सर्विस, ऑल ऑफ द अबव and none of the above. Special network to communicate data in packets is called. Special network जहाँ को व्यवहार करा जाए पैकेट स्विच सर्विस. नो, या भितरु किछि भी नुह, किछि भी नुह, किछि भी नहीं या भितर. स्पेशल नेटवर्क टू कम्युनिकेट डाटा इन पैकेट्स इज कॉल्ड एज. आ भितरु किछि भी नुह. स्पेशल माने स्पेशल नेटवर्क हबो. ये भितरु किछि भी नुह, नॉन ऑफ दिस. काहेकि ना ये केमती आ भितरु किछि भी परिबनी. प्रिंटर इन व्हिच output is printed by using light beam and particles of ink infused on paper is best classified as. Printer जहाँ दिरे हमें आउटपुट पाऊ बा गोटे आउटपुट डिवाइस सेटा लाइट बीम माध्यम रे प्रिंटिंग हेता. समस्त हमें देखि छै लाइट बीम गला को प्रिंटिंग हेता. पार्टिकल्स ऑफ इंक जहाँ की इंक रो पार्टिकल छुड़ा बा इंक रो छिदा गुडा को पेपर ऊपर छिंचाडे बा स्प्रिंकल करिकि करे ताको एग्जैक्टली कोन बोली कहंती. Character printer, option B line printer, option C laser printer, option D beam printer and option E none of these. Yes, you have give as right response as laser printer. Laser light pass करी गला जेम xerox machine रे light pass करी गला को print हे जाउची. Simply laser light pass करी गला को से print कर देथिबो and तार भीतर से तार जहाँ जहाँ ink infuse करके पेपर ऊपर साथ देथिबो. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेजर प्रिंटर बोली ताकू कहंती. ओके, टुडेज लास्ट क्वेश्चन. प्रोग्रामर्स हु राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर कंसीडर्ड एज. प्रोग्रामर्स हु राइट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर आर कंसीडर्ड एज. प्रोग्रामर जो माने सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेखंती से माने को कोन बोली कहंती. ऑप्शन ए सिस्टम प्रोग्रामर्स, ऑप्शन बी analysis programmer, option C trained programmers, option D design programmers. Programmers who writes system software are considered as. Obviously program जे लेखन्ते ताकू तो सिस्टम प्रोग्रामर ही को जीवा कोन. सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते माने सिस्टम प्रोग्रामर. ओके, ताकू कहंती सिस्टम प्रोग्रामर्स. सिस्टम प्रोग्राम डिजाइन माने जो माने विभिन्न डिजाइन करନ୍ତି सेटा नुहे सिस्टम प्रोग्रामर्स कहंती. ओके, द टाइम इज वेरी शॉर्ट.
and we have to complete this class from this point, and from the next class I will come with some other interesting topics for you. Thank you all for joining this class.